Electric current and its chemical effects. This is the new chapter we are going to start. In class 7, you have done electric current and its heating effect and magnetic effect. Heating effect of current and magnetic effect of current already done in class 7. Now in class 8, you have to do electric current and its chemical effects. What happens when electricity is passed through a liquid? In class 7, you did when electricity passed through solid conductors, mostly metals. लेकिन यहाँ in this chapter, here in class 8, in this chapter, when electricity is passed through a liquid, a solution, then what happens? Completely new, lengthy chapter, but very much interesting. As you know, यहाँ try to note down try to note down some definitions which I repeat again and again. ठीक है, कुछ definitions होंगे जो हम सिंपल करके बता दिया करेंगे, तो try to note down somewhere. यहाँ conductors and insulators. Conductors are those materials through which electricity can be passed easily. They are called conductors. Most of the metals are good conductors of electricity. Materials which do not allow electricity to pass through them are called poor conductors or insulators. Plastic, wood, bakelite, etc. Rubber, all clothes, cotton, all these are clothes means cotton clothes. Cotton clothes. So these are the different types of metals, this different types of solid materials on the basis of electricity uh, can be passed or cannot be passed. But what happens when electricity is passed through liquids? तो ये जो liquid when electricity can, or is it possible to pass electricity through a liquid? Yes, बिल्कुल possible है. वो आई थिंक अपने लाइफ टाइम में सभी को एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वो करंट हल्का सा कभी गलती से अगर गीले हाथ से अगर स्विच छू लिया या प्लग छू लिया या कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम कर रहे हैं तो हल्का सा ज़रूर किसी को एक्सपीरियंस हुआ होगा. दैट मीन्स वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ देर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ विच आई वुड लाइक नॉट टू ट्राई एट होम. बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग इस तरह का कुछ एक्टिविटी आप लोग घर पर कुछ ट्राई करें विदाउट द गाइडेंस ऑफ एल्डर्स. बिल्कुल नहीं ये सब ट्राई करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वो फिडल कर छेड़छाड़ करने की चीज़ नहीं है. डोंट फिडल विथ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स. Certain chemical changes occur. So what chemical changes occur? We will discuss it later. First, how is electricity passed through liquids? तो इसके लिए there are certain arrangement you can see on the screen. There is a setup. There is a setup. This setup is known as continuity tester. There is Ma'am, screen is not visible. Ma'am, screen is not visible. okay. Okay, I'm just once again trying. If there is some problem, remind me once again. ठीक है? ये just a minute. What happens when? Uh, what happens when electricity is passed through? What happens when electricity is passed through a liquid? Salt solution, mostly salt solution. So this is your this one. Now I think you can see there is a setup. The upper figure from book and the lower figure same but bigger and properly labeled.
Lower figure is the same. I have drawn this on whiteboard. Lower figure is the same and properly labeled. What happens? There are one, two, and three materials. What are those? Connecting wire, then LED bulb or torch bulb, or battery. You know, arrangement of cells are known as battery. Combined cells are called battery. This is a complete arrangement. This is battery, and you have to arrange like this. This is tester, also known as continuity tester. This is placed in a liquid. This is the figure from the book, and this is the figure, the same figure properly labeled. Tester is placed in different liquids. If the bulb glows, if the bulb glow, it will glow slowly and gradually. It will glow, and you know we have to use low power bulb. अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बल्ब ज़्यादा वाट का बल्ब यूज़ करेंगे तो इट नीड्स मोर इलेक्ट्रिसिटी. When we use zero watt bulb or LED bulb जो दीपावली में यूज़ करते हैं और या टॉर्च बल्ब, तो it consumes very less electricity. So that means electricity will pass through some solution, not all. Electricity will pass through some solution and the bulb will start glowing. This complete setup is known as tester. This setup is known as tester. Tester you also know. At home also you have tester just to know whether the electricity is passing through the socket or the wire. वो टेस्ट करते हैं घर में. वो थोड़ा स्क्रू ड्राइवर टाइप का होता है और उसके लास्ट में वो बल्ब जलने लगता है. इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग तो द बल्ब ग्लोज. घर में जो टेस्टर होता है वो एक्चुअली दैट टेस्टर जो स्क्रू ड्राइवर के जैसा होता है, दैट टेस्टर इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस बेसिस विच आई एम शोइंग यू. कंटिन्यूटी टेस्टर पर ही है, लेकिन दैट इज कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट. यही अरेंजमेंट रहता है टेस्टर में भी, जो ऑर्डिनरी टेस्टर दैट वी हैव एट होम, लेकिन वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है. सिस्टम यही रहता है, यही इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन उसको स्क्रू ड्राइवर के जैसे उसको सेट कर देते हैं. तो when we dip this tester in different solution, the bulb starts glowing. लेकिन remember, all solution does not conduct electricity. Try this for different solution such as tap water. Here lime water is used. Distilled water, orange juice, tomato juice. There are so many types. You can prepare different solution. Place this tester. If the bulb starts glowing, electricity is passing. If the bulb is not glowing, that means liquid is not conducting electricity. So here in this chapter, we will study about uh, conduction of electricity through different liquids. Is some examples. Here are some examples of liquids. You can see lime juice, tap water, distilled water, orange juice, tomato juice, vinegar, vegetable oil, glycerine, and hair oil. Second column, bulb glows or does not glow. So you have to write yes or no. The third column, you have to, agar if bulb glows, good conductor. If bulb does not glow, bad conductor. So in the third column, you have to write good or bad only. Conductor already ऊपर written, you have to write good or bad only. I'm helping you. The solution which contains salts, its own type of salts. Solution, the liquids which contains salts, that will conduct electricity. वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. जिसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. लेट अस डिस्कस ऑल. यहाँ ये देखो, दिस इज द आंसर. बेटर इफ यू नोट डाउन इन द बुक. Better if you note down in the lime juice. Lime juice, it has its own salts. You lime juice citric acid होता है, उसमें जो भी उसका हो, तो दैट मीन्स वो सॉल्ट्स जो हैं, some other salts are also present. तो दैट मीन्स lime juice, bulb will glow, yes.
Good conductor or bad conductor? It is good. Then tap water. Tap water, we all know. The taste of water depends upon the type of salts present in it. Naman Tiwari once again presenting, and my presentation went off. Repeated. Once again it happened. Naman Tiwari, stop presenting. Don't present. So many times I have told you. This is the result. This is the result. You can zoom your screen. Taste of water depends upon the salts dissolved in it. Since tap water contains certain amount of salts, it will conduct electricity and bulb will glow. So answer is yes and good conductor. Distilled water. You know, distilled water is some special type of water present in the laboratory. डिस्टिल्ड वाटर कैसे होता, कैसे प्रिपेयर करते हैं भाई? तो डिस्टिल्ड वाटर, ऑर्डिनरी वाटर इज इवेपोरेटेड इन वन वेसल, किसी एक बर्तन में. उसके खास तरह के सभी को सभी बच्चे जानते हैं कि लैब में वट एवर एक्सपेरिमेंट इज डन, तो उसके सर्टेन टूल्स टेक्निक्स और उसके एपरेटस मीन्स सामान होता है वहाँ, उसमें वो सब काम करते हैं. ऑर्डिनरी वाटर इज बॉइल्ड इन वन वेसल. वाटर वेपर, अब इवेपोरेशन जो है, स्टीम जो फॉर्म किया वाटर बॉईल करने के बाद, दिस स्टीम इज कलेक्टेड इन अदर अनदर पॉट एंड कूल्ड डाउन. You know, steam or water vapor, when it is cooled down, it changes into liquid water. अब ये स्टीम को ठंडा करके वाटर में कन्वर्ट करते हैं. दिस इज डिस्टिल्ड वाटर. And distilled water is tasteless. Distilled water is neutral, neither acidic nor basic. And distilled water does not क्योंकि टेस्ट नहीं होता, because it does not contain any salt. Zero salt होता है distilled water में. That is why distilled water will not conduct electricity. Bulb will not glow, and it is a bad conductor of electricity. Distilled water. Then orange juice will conduct electricity, bulb will glow, tomato juice also, vinegar also. Remember, थोड़ा confusion हो सकता है, लेकिन remember, the liquids that we obtain from the living plants or animals जहाँ से मिल रहा है, देखो जितने हैं, orange juice, tomato juice, vinegar, lime juice, all these are a natural product obtained from living things. ये lime juice वगैरह, they will certainly contain some salts. वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा. देन वेजिटेबल ऑयल, दिस इज ऑल्सो, vegetable oil is also a natural product obtained from plant, but it is bad conductor of electricity. Bulb will not glow. Glycerine also, क्योंकि ये बहुत गाढ़े लिक्विड होते हैं, विस्कस जिसको बोलते हैं, और इसमें सॉल्ट्स डू नॉट फ्लो. ये दिस पर्टिकुलर पॉइंट, फ्लो ऑफ सॉल्ट्स, वी विल डिस्कस आफ्टर दिस, इसके बात करेंगे. देन ग्लिसरीन एंड हेयर ऑयल. Different types of oil, glycerine, distilled water do not conduct electricity. Bulb will not glow. यहाँ भी some restrictions हैं, you know. कुछ ऑयल जो है वो लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन हियर इन दिस चैप्टर वी विल नॉट डिस्कस दोज ऑयल्स और स्पेशल केसेस. वो डिस्कस नहीं करना आउट ऑफ सिलेबस, तो वी आर जस्ट लीविंग देम. तो दिस इज द आंसर for different types of liquids, common liquids. The example for those examples are given. Such examples are given in the book. So this is the answer. Now here, some liquids do not conduct electricity. Now we know from the above activities. Some are good conductors of electricity, some are poor conductors of electricity. The water that we get from different sources like taps, hand pumps, wells, and ponds generally contains several salts dissolved in it. This water is thus reasonably good conductor of electricity. जो ordinary water होते हैं वो. We should
Never handle electrical appliances with wet hands or while standing on a wet floor. It will give electric shock to us. Electricity will pass through our body. Water गीले हाथ से होते हुए will pass through our body and may give us electric shocks. So we have to be careful. Do you know? इंटरेस्टिंग नेचर में हमारे सराउंडिंग में जो कुछ नेचुरली हो रहा होता है, दैट इज़ वेरी मच सपोर्टिव, दैट इज़ वेरी मच लाइफ सेविंग. अब देखो, एयर प्रेजेंट अराउंड अस ऑल द टाइम, घर में हो या बाहर में हो, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. बट लाइटनिंग, ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब तेज बारिश होती है और बिजली चमकती है, बट ड्यूरिंग लाइटनिंग an electric current passes through air. Lightning already done in a paragraph in class 7 हम लोग कर चुके हैं थोड़ा सा इसको. Lightning, when high electrostatic charges, वहाँ when high voltage current is created in upper part of atmosphere during lightning, an electric current passes through air. Actually, under appropriate conditions, most material can conduct it. कुछ suitable condition, special condition मिल जाए तो most of the material can conduct electricity. It is therefore preferable to classify materials as good conductor or poor conductor instead of classifying them as conductor and insulator. कहने का मतलब ये हुआ कि कंडक्टर और इंसुलेटर जो हम लोग अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, एक्चुअली क्लासिफिकेशन होना चाहिए गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर. इंसुलेटर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए. इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल. डेफिनेशन यही है इंसुलेटर का, जैसे वुड, रबर एट्सेट्रा. लेकिन साइंस का कहना है कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, अब लकड़ी गीली हो गई, it will conduct electricity. साइंस का कहना है कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, अंडर appropriate conditions, most material can conduct electricity. So it will be good to classify different materials as good conductor और poor conductors. इस तरह से करना चाहिए. या तो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं या पुअर तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं. गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंस्टीड ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर. अब देखो, ये क्लास 8 में आकर के ये थोड़ा सा चेंज हो गया. क्लास 7 तक था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. नाउ इन क्लास 8, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर. कॉजेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स. टेक सम डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर. बीक वाला, वो थोड़ा सा कोना निकला रहेगा, चोंच टाइप का निकला रहेगा, बीक के जैसा, वैसा ग्लास होता है, वेसल होता है, उसको बीकर बोलते हैं. टेक अ क्लीन एंड ड्राई बीकर. ऑल्सो टेक सम डिस्टिल्ड वाटर एंड वी नो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, अब इसमें डिजॉल्व सम अमाउंट, लिटिल अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड प्लेस टेस्टर. जो टेस्टर, कंटिन्यूटी टेस्टर है, उसको प्लेस करते हैं विथ कनेक्टेड बल्ब एंड बैटरीज एट्सेट्रा. जो प्रॉपर कनेक्शन है उसको वो प्लेस करते हैं. वी विल ऑब्जर्व दैट एलईडी बल्ब ग्लोज. एड मोर एंड मोर सॉल्ट. Add more and more salts to distilled water. The bulb will glow brighter and brighter. And for longer period of time. ज़्यादा समय तक जलेगा बल्ब और ज़्यादा ब्राइट जलेगा. टू द फुल कैपेसिटी, ऑफ कोर्स बल्ब की जितनी कैपेसिटी है, अप टू द फुल कैपेसिटी. तो दिस इज हाउ एडिशन ऑफ सॉल्ट. वी ऑलरेडी नो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्यों नहीं कंडक्ट करता? बिकॉज इट हैज़ नो सॉल्ट्स इन इट. कोई सॉल्ट नहीं होता इसलिए. तो अब ऐसा करते हैं, डिजॉल्व सम सॉल्ट एंड चेक with the help of tester, the bulb glows. Add more and more. Add more and more salt, bulb will glow brighter and for longer period of time. Repeat this activity using dilute hydrochloric acid, caustic soda in place of common salt. लेकिन देखो नीचे एक वार्निंग भी दिया हुआ है, सबसे नीचे caution, use acid or caustic soda
only under the supervision of your teacher, यानी कि in my supervision or lab technician. It can cause harm if handled carelessly. तो इसीलिए ये लैब में जितने सामान आते हैं केमिस्ट्री लैब में, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. एक तो बहुत चीज़ बच्चों को पता नहीं होता है. ज़्यादातर चीज़ें कॉमन सॉल्ट के जैसे दिखती हैं, वाइट पाउडर. और जो लिक्विड होते हैं, कुछ को छोड़ करके मोस्ट ऑफ द लिक्विड अपीयर एज वाटर. लगेगा कि अरे हर बॉटल में तो पानी भरा हुआ है, लेकिन नहीं. मोस्ट ऑफ देम आर एसिड्स. तो केमिस्ट्री लैब में हम लोग को वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. कौन सा एसिड है और कौन सा हार्मफुल सॉल्ट है, वी नेवर नो. नाउ द causes behind कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इतना सारा हम लोगों ने जो एक्टिविटी अभी कवर किया, दैट मीन्स why electricity is conducted through salt solution. If salts are not there, liquid will not conduct electricity. Presence of salts in liquid is must. तो आखिर ऐसा होता क्या है? अब यहाँ पर रीजन सुनना. Why do salt, acid और caustic soda conduct electricity? क्यों ये सब कंडक्ट करने लगते हैं? All salt solution, acids, caustic soda क्यों? Common salts consist of पॉजिटिव एंड नेगेटिव. थोड़ा हम लोग क्लास 7 में आ रहे हैं. आयंस हम लोग पढ़े हैं. Na+, calcium 2 Ca2+, then sulfate minus, then carbonate CO3 minus. So that means ions are there, positively charged and negatively charged ions are there that take part in a reaction. कोई भी रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल एटम्स ब्रेक्स इनटू इट्स आयंस, एटॉमिक चार्जेस उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप. वो आयंस, दे आर कॉल्ड आयंस. दैट मीन्स पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड. व्हेन अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड. अब देखो हम लोग आ गए आंसर लाइन पर. जब किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन तैयार होता है इन वाटर, जब सॉल्यूशन तैयार होता है तो एक्चुअली water breaks uh, water breaks sodium chloride into sodium and chlorine ions. हर सॉल्ट को ब्रेक करता है. अगर हम लोग कैल्शियम सल्फेट का सोल्यूशन तैयार करेंगे, वाटर विल ब्रेक देम इनटू कैल्शियम आयन एंड सल्फेट आयन. कॉपर नाइट्रेट अगर यूज कर रहे हैं, वाटर ब्रेक्स देम इनटू कॉपर आयन एंड नाइट्रेट आयन. when aqueous solution, मतलब watery solution, when aqueous solution is prepared, salt breaks into its positive and negative ions. हमेशा positive and negative ions. For example, solution of sodium chloride. When solution of sodium chloride is prepared, water breaks sodium chloride into सोडियम आयन जो पॉजिटिव है एंड क्लोरीन आयन जो नेगेटिव है. वो ब्रेक करके और उसी सॉल्यूशन में रहते हैं. दे आर प्रेजेंट इन वाटर, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन ऑफ ऑल सॉल्ट्स. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम. अब सॉल्ट सॉल्यूशन से होकर के इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराते हैं तो दीज आयंस मूव. Positive and negative ions move in the solution, and actually it is the movement of ions that help in conduction of electricity. यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ थोड़ा अलग है solid से. When electricity is passed through solid conductor, वहाँ there is no release of positive and negative ions, there is no movement of ions. वहाँ heating effect है solids में. और ऑल पार्टिकल्स हीट अप अदर्स. सारे एक दूसरे को गर्म करते हैं, बट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस. लेकिन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, आयंस मूव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मूव इन द सॉल्यूशन, एंड दैट हेल्प टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्ट सॉल्यूशन.
It is the movement of positive and negative ions that help in conduction of electricity through solution. और अब देखो यहाँ एक नया वर्ड है, यहाँ एक नया वर्ड है, this there is new word, you can see there electrolyte. You can see there electrolyte. Solid conductors are called conductors. यहाँ ये जो conductive solutions हैं, that means the solution that conduct electricity, they are called electrolytes. Good liquid conductors के जगह now the word is being used electrolytes. ये नया word है. Conductors, materials which conduct electricity, and mostly they conductor words is referred to solid metals. यहाँ हम लोग solution के बारे में पढ़ रहे हैं. ये पूरा chapter, the whole chapter is based on the conduction of electricity through salt solution. Salt solution, there are different types of salts. केवल sodium chloride ही salt नहीं होता. There are all chlorides, all types of sulfates, all types of nitrates, all types of acetate, formate, sulfides, etc. All these are salts and all will conduct electricity. Now the definition, the solution that conducts electricity are called electrolytes. Electricity can be conducted with the help of movement of ions in the solution. कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन. Positive ion and negative ion. This is the conduction of electricity through salt solution. If there is no salt in the solution, electricity cannot be passed. Electrolytes. Now you know electrolytes. A compound. अब देखो ये बुक वाला जो है थोड़ा पहले वो मीनिंग समझा दे रहे हैं. इसके बाद आई विल टेल यू अ सिंपलर डेफिनेशन. इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन जो दिया हुआ है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, और आफ्टर दैट आई विल टेल यू द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. अ कंपाउंड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन, पिघला हुआ, और एक्वियस सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन इन वाटर. जहां भी एक्वा वर्ड है, एक्वी वर्ड है, दैट मीन्स वाटर. दैट मीन्स सोल्यूशन इन वाटर, या तो पिघला हुआ हो या फिर वाटर में प्रेजेंट हो. A compound that conducts electricity in molten or aqueous state and which simultaneously undergoes decomposition. Decomposition means breaking into positive and negative ions. When an electric current passes through it is an electrolyte. This is the definition of electrolytes as per your book. But we can also write like this: those solution which conduct electricity easily are called electrolytes. Full stop. Those salt solution which conduct electricity easily are called electrolytes. Full stop. During this, ये दूसरी लाइन है. During this, during this, positive and negative ions are produced in the solution. Positive ions and negative ions of salts are produced in the solution, and they move to conduct electricity. हमने तो ये पूरा प्रोसेस ही बता दिया डेफिनेशन में. देख लो definition. If the definition given in the book it appears easier to you, then it's fine, or you can write like this also. एक बहुत बड़े सेंटेंस को ब्रेक करके भी हम लोग लिख सकते हैं. Those salt solution which conducts electricity are called electrolytes. Full stop. During this, positive and negative ions of salts are released and their movement help to conduct electricity. ये है, वो ब्रेक हो गया, वो आयंस बन गए, ये हो गया डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग. This is what electrolytes are. Definition.